सो हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल लर्न गुरु आशीष में। आज फिर से हम लोग न्यू करंट अफेयर का सेशन आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। और ये जो करंट अफेयर का सेशन है ये आपका होगा 11 और 12 मार्च का। और गाइस, प्रीवियस में भी मार्च से स्टार्ट हुआ है, 1 से 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे डे बाय डे करंट अफेयर, तो वो भी आप लोग जाके देख सकते हैं। और उससे भी पहले भी प्रीवियस में जनवरी फेब का मंथ का करंट अफेयर्स का वीडियो अपलोडेड है। सो प्लीज़ एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता है। सो प्लीज़ शेयर करिए हमारे सेशन को और ढेर सारा प्यार दीजिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि ऐसे ही करंट अफेयर का हर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के सामने लेकर के आ सके। So please do like and subscribe to our channel and Guru Ashish to get daily updated current affairs video. Okay. So without wasting any time, let's start with our first question. Which country received the Measles and Rubella Champion Award? A. India, B. Australia, C. Brazil or D. Argentina? The right answer will be option A. India. India is the country who received the Measles and Rubella Champion Award. Now moving into our next question. ये आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। Measles and Rubella Champion India, Ministry of Health and Family Welfare, in recognition of your commitment to the mission of the Measles and Rubella Partnership, the impact of your efforts are an inspiration to all working towards the goal of a world without measles and rubella. India received Measles and Rubella Champion Award. Moving to our next question, question number 2. Who has been selected for the Architecture Nobel Picture Prize 2024? A. David Chipperfield, B. Riken Yamamoto, C. Balkrishna Doshi or D. Kenjo Tange? The right answer will be option B. Riken Yamamoto. Riken Yamamoto has been selected for the Architecture Nobel Picture Prize 2024. गाइस, एक सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करने से कुछ आपका कुछ नुकसान नहीं होगा। सो आप एक मेहनत को अप्रिशिएट भी कर सकते हैं। यहाँ कोई आपको चार्ज पे करना नहीं पड़ रहा है, ना किसी चीज़ का कोई कोर्स बेचा जा रहा है, बस फ्री का कंटेंट है। तो एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने से कुछ हानि तो है नहीं, ना आपके अकाउंट से पैसा डिडक्ट होने वाला है। तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू लर्न गुरु आशीष। काफ़ी मेहनत होता है एक कंटेंट को तैयार करने में, काफ़ी घंटों का समय लगता है। सो इतना तो कर ही सकते हैं। नाउ मूविंग इनटू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट इज द थीम ऑफ द जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2024 कैंपेन? ए. वाटर फॉर ऑल, बी. नारी शक्ति से जल शक्ति, सी. सस्टेनेबल वाटर फ्यूचर और डी. सेव वाटर सेव लाइफ? जल शक्ति अभियान कब सेलिब्रेट किया गया? तो 9 मार्च 2024 को। ओके। और इसका थीम क्या था? तो नारी शक्ति से जल शक्ति। याद रखिएगा, ये नारी शक्ति से जल शक्ति इज द थीम ऑफ द जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2024 कैंपेन. Now moving into our next question, question number 4. Where was the exercise Cutlass Express 24 organized recently? A. Sri Lanka, B. Mauritius, C. Seychelles or D. India?
The right answer will be option C, Seychelles. The exercise Cutlass Express 24 organized recently in Seychelles. The right answer will be option C. Now moving into our next question, question number 5. Who was elected unopposed as the president of the Paralympic Committee of India (PCI)? A. Devendra Jhajharia, B. Deepa Malik, C. Bhavna Patel, or D. Amisha Sharma? The right answer will be option A, Devendra Jhajharia. Devendra Jhajharia was elected unopposed as the president of the Paralympic Committee of India. Now moving into our next question, question number 6. When is CISF Raising Day celebrated annually? A. 15 February, B. 10 March, C. 20 April, or D. 5 May? The right answer will be option B, 10th March. CISF Raising Day celebrated annually on 10th March. Moving into our next question, question number 7. Who has become the first fast bowler in the world to take 700 test wicket? A. James Anderson, B. Kanishka Sharma, C. Mitchell Stark, or D. Mohammad Sami? The right answer will be option A, James Anderson. James Anderson has become the first fast bowler in the world to take 700 test wicket. Now moving into our next question, question number 8. Where was Santosh Trophy 2024 organized? A. Port Blair, B. Arunachal Pradesh, C. Goa, or D. West Bengal? The right answer will be option B, Arunachal Pradesh. Santosh Trophy 2024 organized in अरुणाचल प्रदेश, और अरुणाचल प्रदेश में भी कहाँ तो ईटानगर में. ठीक है. Now moving into our next question, question number 9. Who won the Miss World 2024? A. Christiana Pliskova, B. Yasmin Cheytoun, C. A. K. Abraham, or D. Sini Shetty? The right answer will be option A, Christiana Pliskova. Christiana Pliskova won the Miss World 2024. Now moving into our next question, question number 10. Who recently resigned from the position of Election Commissioner? A. Arun Kumar, B. Ananya Sharma, C. Arun Goyal, or D. Vikram Rathod? The right answer will be option C, Arun Goyal. Arun Goyal recently resigned from the position of Election Commissioner. Now moving into our next question, question number 11. Where will the tri-service exercise Bharat Shakti of the three armies start? A. Rajasthan, B. Haryana, C. Odisha, or D. Gujarat? The right answer will be option A, Rajasthan. The tri-service exercise Bharat Shakti of the three armies started in Rajasthan, और राजस्थान में भी कहाँ तो पोखरण में. Now moving into our next question, question number 12. Who has recently been awarded the Erasmus Prize of Netherlands? A. Amitav Ghosh, B. Yatin Bhaskar, C. Tata Sons, or D. Tiger Woods? The right answer will be option A, Amitav Ghosh. Amitav Ghosh recently been awarded the Erasmus Prize of Netherlands.
Now moving to our next question number 13. Who recently received the Best Film Award at the 96th Oscar Award? A. Poor Things, B. Oppenheimer, C. The Holdovers, or D. Anatomy of a Fall? The right answer will be option B. Oppenheimer. Oppenheimer received the Best Film Award at the 96th Oscar Award. Now moving to our next question number 14. Which missile was tested during mission Divyasastra with MIRV technology? A. Agni 1, B. Agni 2, C. Agni 5, or D. Agni 6? The right answer will be option C. Agni 5. Agni 5 is the missile which was tested during mission Divyasastra with MIRV technology. DRDO scientists for mission Divyasastra, the first flight test of indigenously developed Agni 5 missile with MIRV technology. Now moving into our next question number 15. Which doubles title of the year 2024 has the pair of Satvik and Chirag won? A. India Super, B. French Open, C. China Master, or D. Malaysia Super? The right answer will be option B. French Open. Satvik and Chirag Shetty win French Open badminton title. French Open doubles title of the year 2024 has the pair of Satvik and Chirag won. Now moving into our next question number 16. According to a report of ICEA, what is India's position in the manufacturing of mobile phones in the world? A. First, B. Second, C. Third, or D. Fourth? The right answer will be option B. Second. Now moving into our next question number 17. Who won the Santosh Trophy in the 2023 and 24 season by defeating Goa? A. Kerala, B. Services, C. Punjab, or D. Maharashtra? The right answer will be option B. Services. Services won the Santosh Trophy in the 2023-24 season by defeating Goa. Now moving into our next question number 18. The central government has implemented the Citizenship Amendment Act 2019 for the citizen of which country? A. Afghanistan, B. Bangladesh, C. Pakistan, or D. all of the above? The right answer will be option D. all of the above. ये जो CAA सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट 2019 ये जो कंट्रीज के सिटीज़न के लिए आया है वो है अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान। तीनों कंट्री के लिए ये इम्प्लीमेंट किया गया है। नाउ मूविंग इनटू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19. Which branch of the Indian Armed Forces is set to establish the two Army Girls Sports Companies? A. Indian Navy, B. Indian Air Force, C. Indian Army, or D. Indian Coast Guard? The right answer will be option C. Indian Army. Women's Day 2024 Indian Army launches Army Girls Sport Company. Now moving to our next question number 20. Where did PM Narendra Modi unveil the 125-foot statue of Lachit Borphukan? A. Guwahati, B. Dibrugarh, C. Tezpur, or D. Dibrugarh?
इस क्वेश्चन में डिब्रूगढ़ 2 बार रिपीट हो गया है, इसको कट करके यहाँ पे जोरहट मेंशन कर दीजिए। द राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, जोरहट। और ये जोरहट कहाँ पड़ता है? असम में। ठीक है, तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, जोरहट। पीएम नरेंद्र मोदी अनवील द 125 फुट स्टैचू ऑफ लचित बोरफुकन इन जोरहट इन असम। सो आज का 20 क्वेश्चन करंट अफेयर का यहीं पे समाप्त हुआ। ऐसे ही करंट अफेयर्स के अपडेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, सो दैट आपको हर दिन का करंट अफेयर डिटेल में मिलता रहे। सो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल लर्न गुरु आशीष। थैंक्स फॉर वॉचिंग।